Hello and welcome back to our news channel. Students, today we are heading somewhere you might not expect. Arctic. Yes, that frozen faraway region on top of the world is becoming a hot topic in global politics and trade. And guess what? India is paying close attention. So grab your earphones, settle in, and let's explore the icy frontiers and India's future in the Arctic region. Now, students, when I talk about Arctic region, you may think the Arctic is just endless snow and polar bears. But it's much more than that. The Arctic is a huge area around the North Pole. Okay, and it's mostly covered in ice and surrounded by countries like Russia, Canada, US, Greenland, Finland, Sweden, Norway. But climate change is melting the Arctic ice faster than ever before. So according to NASA, yes, NASA, which is a US American US space agency. So according to NASA, the ice is shrinking by over 12% per decade. A period of 10 years is called decade. Okay. So ice is shrinking by over 12% per decade compared to the average between 1981 से लेकर 2010 तक. Yes. So that's like watching a giant icy lid slowly disappear. तो जो 12% पर ईयर डेकेड के हिसाब से अगर मेल्ट हो रहा है तो आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी जल्दी जो आइस की शीट है वो मेल्ट हो रही है. सो व्हाई डज दिस मैटर? फर्स्ट स्टूडेंट्स, इट्स अ साइन ऑफ क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी. Melting ice can change weather patterns worldwide, especially regard to Arctic region. And uh, this will also have effect on India's weather, including monsoons, which are vital for our agriculture. Okay. Second, it also opens up new sea routes. Now, this we have covered a few weeks back, right? The melting of ice in Arctic region is actually opening up new sea routes, and many countries like Russia, US, Greenland, they are quite interested in that region. So imagine if you could take a shortcut through ice instead of going the long way around continents. So that's what the Northern Sea Route NSR does. Okay, it connects the Atlantic and Pacific Oceans, making global shipping faster and cheaper. तो उससे क्या होगा? नॉर्दर्न सी रूट क्या है? कौन सा रीजन में है? आर्कटिक रीजन में है. किसको कनेक्ट कर रहा है? अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन में. और इससे फायदा क्या हो रहा है? इट इज मेकिंग ग्लोबल शिपिंग फास्टर एंड चीपर. Now you may wonder, India is far away from the Arctic, so why should we care? See, Arctic is becoming a global crossroads for energy. Okay, energy, trade, साथ साथ साइंस के लिए भी. And this Arctic region, it's full of untapped resources like oil and gas. So, with rising sea levels and melting ice, this region could soon become a bustling trade hub. And India wants to be part of that story. Simple. है ना? क्योंकि अब जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रहा है तो यहाँ पर ऑयल और गैस भी मिलने के चांसेस हैं और बहुत जल्दी एक ट्रेड हब में बन जाएगा और इंडिया वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट. So, what India is doing, India is quietly building its presence in the Arctic. Okay, we have signed the Svalbard Treaty. Okay, Svalbard Treaty.
अब ये क्या है, वे बैक इन 1920 में ही हमने साइन कर लिया था. एंड टुडे वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन आर्कटिक रिसर्च. ओके, सो agencies like ISRO, what ISRO is doing? ISRO, the Ministry of Earth Sciences, and National Center for Polar and Ocean Research are studying how Arctic changes affect India, especially our climates and monsoon. Okay, India has also joined the Arctic Council. Okay, India has also joined the Arctic Council. अब इससे क्या होगा, एज एन ऑब्जर्वर, और the number of observer countries in the council is greater than actual Arctic nations. Okay, so this is an interesting fact. And that means even non-Arctic countries see the value in being part of Arctic discussion. तो इससे क्या पता चल रहा है, इंडिया आर्कटिक कंट्री तो है नहीं. आर्कटिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो आर्कटिक के सराउंडिंग है, लेकिन स्टिल इंडिया इज पार्ट ऑफ आर्कटिक काउंसिल एज एन ऑब्जर्वर. अब जो ऑब्जर्वर है उन कंट्रीज की लिस्ट ज्यादा है as compared to the actual countries who are Arctic nations. So इसका मतलब क्या है, even non-Arctic countries want to be part of Arctic discussion. Okay. Now students, let's focus on that fascinating new trade highway, the Northern Sea Route. है ना, नॉर्दर्न सी रूट के बारे में हम फिर से बात करते हैं. तो नॉर्दर्न सी रूट क्या है, उसका क्या है रोल. अब जैसे जैसे आर्कटिक आइस मेल्ट होगा, it will reveal a navigable sea route connecting यूरोप टू एशिया, और जो कि रशिया से पास होगा. है ना, आप ये देखो इस मैप में. यस, जैसे जैसे आइस मेल्ट होगा उससे क्या होगा, अब पहले तो पूरी एक आइस की एक शीट बिछी हुई थी, तो वहां पर नेविगेट करना ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन जैसे जैसे आर्कटिक आइस मेल्ट होगा उससे क्या होगा, नेविगेट करना इजी हो जाएगा. Okay, and compared to traditional shipping paths that go around the Africa or through the Suez Canal, the NSR, Northern Sea Route, is much shorter and faster. So this will save time, fuel and money. अब ये जो रूट है किस किस को कनेक्ट करेगा, यूरोप को एशिया के साथ कनेक्ट करेगा, नॉर्थ ऑफ रशिया से पास होगा. ओके, and here's the twist. India sees the NSR as a strategic gold mine, not only for trade, but also for energy security and geopolitical influence. But sailing through icy waters isn't easy. Ships, of course, they need to be strong, है ना. अब आइसी वाटर से गुजरना कोई मजाक थोड़ी ना है, उसके लिए शिप्स को क्या होना इम्पोर्टेंट है, स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट है. ओके, so ships need to be strong. Ice breaking vessels built for extreme condition need to be incorporated. That's why the Indian government in its 25-26 budget announced that there will be 3 billion maritime development fund for shipping ministry along the promoting shipbuilding clusters. Okay, so 3 billion maritime fund announce किया गया है किसके लिए, to boost our shipping capabilities, because we need ships that can handle ice. Okay, we need shipbuilding hubs and new ports to truly become an Arctic ready nation. India is very much interested in the Arctic region. Okay, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो. अब वहां पे नेविगेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग शिप्स की जरूरत है, तो इसीलिए इंडिया ने 25-26 के बजट में 3 बिलियन मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड हैज बीन सेट फॉर शिपिंग मिनिस्ट्री. Okay, now let's talk about diplomacy. See, this year in May, this year, in May, New Delhi is hosting the Arctic Circle India Forum. Okay, and this is a big deal for us. Why? Because it will bring together scientists, policymakers, and diplomats to discuss India's role in the Arctic. Okay,
And one exciting idea is also being floated, is that there will be appointment of a polar ambassador, who will be a special representative to advocate for India's Arctic interests internationally. ओके, तो पोलर एम्बेसडर का भी अपॉइंटमेंट हो सकता है जो इंडिया के इंटरेस्ट की बात करेगा इन आर्कटिक, रिगार्डिंग आर्कटिक इंटरेस्ट में एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. Okay, and with cargo shipments on the NSR growing, India must act faster, or India's gonna risk missing the Arctic train, or rather ship. Okay, तो इसीलिए इंडिया को जल्दी जल्दी सोचना होगा, जल्दी जल्दी काम करना होगा. Okay, now students, let's get into the complicated stuff. Geopolitics. Who controls what? Who trades with whom? See, Russia has a long Arctic coastline and tons of experience navigating icy waters. और रशिया के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना. आपको एक बारी रीजन उसको देखना मैप में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, साइबेरिया है वहाँ पे. सो रशिया के पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है कि आइसी वाटर में कैसे नेविगेट करना है. इंडिया एंड रशिया ऑलरेडी साइंड एन अग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर ऑन आर्कटिक ट्रेड. And at the same time, a special group working group was formed in 2023 uh, to strengthen this collaboration. ठीक है, एक चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर भी है जो कि इमर्ज हो रहा है, विच कुड कनेक्ट इंडियन पोर्ट्स टू आर्कटिक पोर्ट्स लाइक पेवेक एंड तिक्सी. ओके, तो जिसमें इंडिया के जो पोर्ट होगा, पोर्ट जहाँ पे शिप आता है, उसको रशिया के पोर्ट के साथ कनेक्ट करेगा. ओके, सी, पर यहाँ पे भी ना एक ट्विस्ट है. इफ इंडिया गेट्स टू क्लोज टू रशिया इन द आर्कटिक, इट माइट इनडायरेक्टली सपोर्ट चाइनाज पोलार सिल्क रोड. ओके, चाइना की पोलार सिल्क रोड को इनडायरेक्टली इंडिया सपोर्ट करेगा, विच इज पार्ट ऑफ देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंडिया सपोर्ट नहीं करता है. So that would give China more control over Arctic trade routes, bypassing the important straits like Malacca and increasing their influence in global shipping. On the flip side, if India leans more towards the Western Bloc, especially US, we might lose a stake in resources currently under Russia's control. So, what's the solution? सबसे best solution है work with both sides, Russia as well as US, and bring in partners like Japan and South Korea who also have concerns about China's rising Arctic influence. Okay, but let's not forget the risks are also there. क्यों, क्या क्या risk है? Melting Arctic ice may open trade routes, but it also destroys fragile ecosystems. It will also threaten wildlife, and it can also accelerate global warming. So it's like opening a treasure chest in the middle of a collapsing house. So India must tread carefully. We need what? A balanced Arctic policy, one that boosts trade and science but also respect the environment. Okay? So think of it like this. We don't want to fly so fast in the future that we crash into a disaster. All right? So students, that's all for today, and I hope you are clear with India's role in Arctic region and how it could shape our future in ways we are only beginning to imagine. Okay, so thanks for listening. Don't forget to subscribe, share with your classmates. Okay, and stay curious. Until next time, stay wise and keep exploring the world around you. Bye bye.